मैडम, सब लोगों को नमस्कार। So, how was yesterday? Did you complete? Did you had a chance to complete? Yes, sir. मैंने complete कर दिया था. Yes. So, power of thought, power of manifestation, we have discussed yesterday. And if you have any questions, I will take. But before that, Neeta madam wanted me to take some topic first and then go for the question answers, because I have another session also for Vietnamese. All right. So today's topic is health. Health is wealth. Are you ready for it? Okay. So first, you stretch yourself, because just now we did meditation. So stretch yourself, relax, and sit comfortably. Take a pen, notebook. Prepare yourself to take down the notes. And when you hear, you understand a certain percentage. When you write, you understand a little more percentage, a greater percentage. And when you read back what you have written, you understand more, deeper. So whatever you hear, you have to write it down. And whatever you write down, you have to refer again and again. So that's when this knowledge becomes part of you. This spiritual knowledge, you need to listen again and again so that you understand the depth of it. Okay, friends? Are we ready? सर कह रहे हैं कि सभी लोग अपनी कॉपी पेन ले लें. आप जो भी मुझसे सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुन के लिखिए. जब आप सुनते हैं तो बहुत सी चीजें सीखते हैं, और जब आप लिखते हैं तब और ज्यादा समझते हैं, और जब जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हैं तो आप और ज्यादा समझते हैं. तो आपको ऐसे नोट्स बनाने चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए. तो सभी लोग कॉपी पेन ले लें, और जितना आपको हिंदी सर की समझ में आ रही है, जितना आप बना सकते हैं आप बना लीजिए. बाकी फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा, जब मैं बताऊंगी तो उसको लिख लीजिएगा. Yes, sir. Okay. So health is wealth. This is what we have heard from our childhood. Being rich, having bungalow, car, property, this is not the real enjoyment of life. Those gives comforts. Materialistic things gives you comfort. But when you are healthy, then that is your real wealth. If you are healthy, you can enjoy your wealth. If you are not healthy, even if you have wealth, you cannot enjoy it. So health is the real wealth, my dear friends. So when we speak about health, generally, there is something called holistic health. You know, the doctors speak about only physical health. What is a holistic health? Holistic health is physical health, emotional health, psychological health, and spiritual health. So we have physical health, emotional health, psychological health, and spiritual health, 4 categories. So once you understand what is health in all its dimensions, then you get the benefit of the real health, and that is the holistic health. Fundamentally, everybody needs physical health. Okay, so let us go stages by stages. Fundamentally means basically, fundamentally, everybody needs physical health. The human life on the planet Earth, see, we all have incarnated. We are all Atma, we are all soul. But we have incarnated on this planet Earth. So on this planet Earth, the rules of the game is, if you are having a good health, then you can do a lot of things. So human life depends on physical health, fundamentally. So if you have a good physical health, then your life on the planet Earth is vibrant.
But unfortunately, most of the humanity is suffering with ill health, lesser lifespan, illness, diseases, and they are not able to sustain their body for a longer period of time. So by the time they reach 50, 60, 70, they are going through illness and they vacate the body. Helplessly, they are vacating the body. That is a sad state of affairs right now on the planet Earth. But if you go to the advanced dimensions, if you go to other star systems, the beauty is they can live as long as they want. They can live 200, 300, 400, 500 years. They can live as long as they want. And they live healthy. And they vacate the body at will. When they finish the work, they vacate the body and go to another dimension. That is a state of affairs in the advanced dimensions, in the other star planets, the star systems. Even on the planet Earth, very few people, even currently, they are able to do that. You take the yogis in Himalayas, they live for hundreds of years. They live very healthy. And once they finish the work, they vacate the body at will. They drop the bodies and go back. That should be the way. You should not vacate the body helplessly. You should vacate the body at will with great joy. You are going back because you finished your work. And as long as you are living in the body, you should be healthy. Whether you are living for 100 years, 90 years, doesn't matter. You have to live healthy till the last minute. That is the real health. So, humanity right now, they don't understand. There is no understanding of the body in the first place. They lack the understanding of body. And there is no understanding of life science. Because of the lack of understanding of body science and life science means the art of living, how to live. That is the life science, the art of living. Because they lack this understanding, the humanity is suffering. And also the humanity is suffering because of a little bit of ignorance, a little bit of laziness, and a little bit of arrogance. So this ignorance, laziness, and arrogance contributes to the suffering of the ill health. It is fundamentally a great mistake. It is a great mistake if people think they are body and they're only made up of cells, atoms, molecules. It is wrong. If you think you are only made up of atoms, molecules, cells, then suffering is inevitable. There are many supporting factors. What you see, the cells, the microcells, the atoms, the nanocells, the molecules, what you see, that is not only the physical body. Along with that, there are many supporting factors. Behind the screens, there are many supporting factors like willpower, knowledge power, and execution power. In Sanskrit, we call it as Ichcha Shakti, Jnana Shakti, and Kriya Shakti. So this background energy, this Ichcha Shakti, Jnana Shakti, and Kriya Shakti, this background energy is the supporting factor to your physical body, to the health of your physical body. Okay. And there is always a cause behind every effect. This is a great spiritual law. There is always a cause. For every effect, there is always a cause. I'll give you an example. If you want to build a house, you want a house. So to build a house, you need blueprint, you need planning, blueprint, and you need engineers, and you need mason, you need workers, you need so much of staff, manpower, and then finally
the house is constructed. You see, first you need the willpower. Your willpower should be very strong, that you need a house. Yes, without that willpower, you cannot manifest. So the first is you need a strong willpower, Ichha Shakti. Yes, I want to build a house. So you need to have that willpower. And then you need the power of the knowledge. You need the support of the engineers, the technicians. They go through a lot of education. The engineers, they go through the engineering studies. They do specialization, architecture, engineering. They study for 4 years, 5 years, and they bring in that knowledge to do the planning, to do the blueprint. And then you need Kriya Shakti. You need a lot of people to take the bricks and cement and sand and place one by one to build the whole structure. So you need all this combined force. And the output is you have a house. So the cause is what is behind the screens. Behind the screen, what is happening, that is the cause. And what you can see in front of you in the physical manifestation, that is the effect. So if you want a house, then there is so many things behind, in the background. Okay. And similarly, I'm giving you this example so that you understand. Similarly, to have this body, how this body has come from. When a male and a female, when they come together, then the sperm from the male and the ovaries, the egg from the female, they come together, they form a zygote, and then slowly the cells start splitting itself in the mother's womb, and then slowly, the little bit, the body parts starts forming. It takes 9 months to have every single body part in the mother's womb. And do you think it's just only atoms and molecules which is multiplying? No. The soul, before the soul chooses the mother and father. So when the soul chooses the mother and father, after the soul chooses the mother and father, the soul actively, like we want to build a house, we sit in the home, we do all the planning, we deal with the engineers, we deal with the workers, we make sure the house is constructed. Now and then we'll do the site visit to make sure the house is building correctly or not. And we sit back at home. And once the whole entire house is completed, then we go and enter the house. We do the housewarming ceremony and we enter the house. Similarly, before the soul incarnates, the soul from the higher worlds, the soul is in the higher worlds, right? In the causal world. So sitting in the causal world, the soul does a lot of planning. Okay. And every lifetime, the soul brings with the karma, right? There is this prarabdha karma. So prarabdha karma is in that particular lifetime, what are the lessons to learn and what are the karmic balances it has to make. So according to the karma of the soul plans what kind of a body, whether it should be fragile or whether it should be stout, strong, whether it should be born with certain defects or whether it should be born very healthy. So everything is planned by the soul according to the karma, according to the prarabdha karma. And this, to multiply the cells and to maintain this process of building from the fertilization of the sperm and egg, and then getting into the zygote and embryo, and then getting into the baby stage, there are millions and millions of nature spirits who work. They're all invisible. The nature spirits, elements, they are invisible. They are not visible to the eyes. So they help. They are like the workers. They help build the body parts inside the mother's womb. This ordinary people don't know. Even doctors don't know. Only a spiritual person, only a yogi knows all those things. When you have a third eye, you can able to see and understand all those things. If you want to understand health, you want to understand how the body is prepared in the first place. So much of efforts.
It's not just like that. The body is automatically created in the mother's womb. No, so much of planning, so much of masters, so much of nature spirits, all working together to have this body prepared. And the soul monitors or the whole process from the higher worlds. Okay. And it contributes in the building process. The soul contributes in the building process along with the nature spirits. And once the entire body in the mother's womb is ready, then the soul enters. With the first breath, the soul enters completely. When the baby inhales the first breath, that is the time the soul is completely entered. The housewarming ceremony has happened. Okay. Sometimes the soul decides, no, I don't want to come. So what happens? The body is prepared in the mother's womb, but the soul decides, no, I don't want to go now. That results in miscarriage. Because the soul is not interested to come. The soul has contributed, the soul has decided, and the soul, together with other nature spirits, it built the body. But in the last minute, the soul said, no, this is not the right time. I will come at a later stage. So then it results in a miscarriage. Everybody has free will. The soul also has free will. So it results as a miscarriage. But if the soul comes and takes the first breath, so that means it enters the body. So then the soul, the body is like a new house for the soul. So like after we do the housewarming ceremony, we enter in the house similarly. And after the body is been built, the maintenance is also done by the nature spirits. You have to understand, to sustain the body organs like the kidneys, the liver, the heart, we have thousands and thousands and thousands of minute parts, major parts, small parts. So to maintain, again, the nature spirits, they help in the maintenance process. Behind every organ, there is a field force. There is a field force behind every organ, and there is a workforce. There is a workforce behind every single organ. Only with the greater understanding of spiritual science and having the spiritual knowledge, you can understand all those things, my dear friends. So a lot of work is there behind the screens. It's like, your movie, you go to a movie, you see 2 hours movie on the screen, you see the movie Bahubali, 2 hours, 2.5 hours, you go to the theater. But to make that 2 years movie, they work for 5 years. And how many employees? Thousands and thousands and thousands of employees and technicians from all over the world. They have worked effortlessly with a single motto of producing that movie. The effect, what you are seeing in the screen. But behind the screens, you cannot see with the physical eye. Similarly, in the process, if you want to understand how your body is made, you want to understand what is the preciousness of your body, you need to have the spiritual understanding. And now, yes, you might say, yes, sir, now I have understood. Yes, it is very precious. So many people have worked together. But now we have already destroyed a little bit of our health, or we want to maintain our health right now. Right now, we got our lesson, so we want to live healthy. So what should we do? That is the fundamental question. Many people say, take care of yourself, look after yourself. People just simply say, when you visit friends, they say, okay, take care, bye-bye, take care. So what does that mean? Take care. Take care means look after your health. Unless you are healthy, you cannot live on the planet Earth for a long time. So, Kayal Rakna, look after your health. So, how do we look after the health? What are the steps? Let me go into that. So, this is the part 2 of our discussion, health is wealth. So, how to take care of the body is the first and the foremost is you have to understand that we are not the body.
We are Atma. We are a soul. We are pure consciousness currently residing in the body for a short amount of time. We are all visitors to the planet Earth. So currently we are living in the body, but we are not the body. Once we finish our work on the planet Earth, we will go back. See, before the soul is born, the soul chooses, I'm going to live for 30 years, 40 years, 50 years, 100 years. The soul will choose. This is this much time I will live on the planet Earth. It is part of the planning. And until the time the soul already planned, until that time the soul will live on the planet Earth. Suppose the soul has planned to live for 80 years or 90 years or 100 years. For 100 years, 80 years, the soul will live. But the question is, how are you living? Are you living healthily, happily till the last breath? Or you are living a life of suffering and illness and disease? That is the question. So fundamentally, we have to understand we are not the body, we are pure Atma. This is the most important thing to remember all the time. Every single moment you have to remember that I am an Atma. You have to repeat yourself. You have to keep telling yourself. Every day you get up in the morning from the bed, you look into the mirror, you tell yourself, I am not this, I am Atma. Every day in the morning you look into the mirror, you tell yourself, this is the body I'm having in this lifetime, but I'm pure Atma. With this understanding, you will have a lot of Atma Shakti. This is very, very important. Many people don't know this. Atma Shakti, you have to underline the word. This Atma Shakti is very, very important energy which will sustain your life in a healthy way. It is important to remember. All the time, every day you remember, I am not the body, I am not the body, I am Atma. So, through this remembrance, you will have a lot of Atma Shakti with you. And that is very, very important, the most important for the well-being of your health. To take care of your health, that is the first point. And the second point is, for maintenance, for the sustenance of the body in a healthy shape, you need a lot of prana shakti. You need a lot of oxygen or prana shakti. This prana shakti you get in meditation. Without meditation also we breathe oxygen, we breathe prana. Body on its own breathes prana. But in meditation, you give more prana, you give added prana shakti. So that prana shakti helps you to sustain the very good health. Okay. If you go to Bosnia, in the Bosnian pyramids, there are underground tunnels, and they measure the energy in the underground tunnels as negative ions. Like the more the negative ions, they have devices to measure that also. The more the negative ions, the more vibrant you feel. For example, in the cities, in the crowded cities like Mumbai, Delhi, maybe the negative ions are very less, maybe 2000 ions per cubic meter. But if you go to villages, then the negative ions are maybe 5,000, 6,000, 7,000. But if you go to nature, like forest, virgin forest, waterfalls, you go to that nature spots, then the negative ions are probably 10,000, 15,000. Inside a pyramid, the negative ions are also around 10,000 and 15,000, 20,000. But in the Bosnian pyramids, the negative ions are more than 20,000. The underground tunnels, the Bosnian pyramids, the negative ions are more than 20,000. They measure it in the Bowie's scale. So what does this negative ions mean? This is the prana shakti. You go into the nature has more prana, the more pranic shakti. Just imagine, have you ever experienced taking a shower in a waterfalls? Have you ever experienced taking a shower in the nature, in the waterfalls? You feel so fresh, you are vibrant. You want to live life, you want to enjoy life. So that is because of the prana. That is because of the prana shakti from the nature. So more and more meditation, spending time, more and more time in the nature gives you more and more prana shakti. So the first is, you should always remember that you are an Atma.
then you get Atma Shakti. Number 2, you should do more meditation. More and more meditation. And then spend time in the nature so that you get more oxygen, more Prana Shakti. The third is water. Our body is made up of 80% water. So water is, first is the Atma Shakti, next is the Prana Shakti, the third is water, Jala Shakti, water energy. You have to drink plenty and plenty of water. In this detox process, I would have repeatedly told you should drink at least 5 liters of water, at least 5 liters of water every day. All the time your stomach should be full of water. The more water you have, the more vibrant your health will be. So that is the importance of water. All the time you have to drink water, water, water. And we have already experimented in the retreat. The more you drink water, the more you feel healthy, vibrant. And then comes the right food. Food is meant for taste. Food is meant for celebration. Food is meant to enjoy. So food comes last. People think when we eat food, you get energy. No. There are thousands of people who live without eating food. Breatharians, they live on Prana Shakti, like all the yogis in Himalayas. And there are many people in the Western world also. Like you would have heard about Jash Mohin from Australia. It's a famous lady. So she was living for more than 40 years only with prana. No food, nothing. Not even fruits. She lives only on prana. So food is not a necessity, my dear friends. Food is meant only for taste. And people think, oh, if I don't eat meal one day, something might happen to me. I might get ulcer. I might, feel hungry. And, so much of phobias and so much of fears you are having that if you don't eat food, you will die. Of course not. As long as you have Atma Shakti, as long as you have Prana Shakti, nothing will happen to you. Okay. So food, you have to understand, is fundamentally to enjoy the taste, to enjoy the nature. Nature has beautiful food, a lot of fruits, vegetables, to enjoy the nature and to enjoy the taste. The spices, cook as quality as possible, as delicious as possible. But food is not a necessity. But yes, food also plays an important role. You have to take the right food. If you take the right food, then it helps in your health. But if you take the wrong food, it destroys your health. The food has to be the right food, the balanced food. So now let us go into the subdivision of the right food. Okay. So the right food, what is the right food? The right food is sattvic food, a food which comes from love and gratitude, not from pain and suffering. When you are killing animals and eating that bloody food, that is not the right food. That will destroy your health. The right food is you eat the food of love from the trees, plants. The plants produce the food out of love to serve. It is full of love energy. So that is the right food. That's the point number 1. And the second point to remember is you should eat only when you're hungry. Some people, they have the habit of eating, oh, it's morning 7 o'clock, time for the breakfast. Oh, 1 o'clock, I have to eat the lunch. 7 o'clock again, 7 p.m. No, where is my dinner? I need to eat my dinner. So whether they are hungry or not, they watch the time. They don't listen to their stomach, whether they're hungry or not. They listen to the time, they listen to the alarm clock, and then they eat. That is a very, very bad habit which will destroy the health. So the right food, the balanced food is you should eat only when you're hungry. If you're not hungry, you should never eat food. This is very, very important. And also, how much to eat? Only 3/4. Your stomach should be 3/4 full. You should not eat 100% full stomach. If you eat 100% full stomach, then you lose the health. So there should be always little bit of hunger,
20%, little bit of hunger always should be left so that you can enjoy the next meal, so that you can live a healthy life. So you should never eat stomach full. 100%, no. Maximum 75%. That's all. 25% your stomach should be empty. Right? And then sattvic food. What is sattvic food? The food which is pure vegetarian, and also the food which is cooked with a lot of gratitude, with a lot of love, and the food cooked mindfully. The person who is in the kitchen, they should make sure they never take their mobile into the kitchen. Some people have the habit of keeping the mobile like this, they keep the mobile like this and they keep cooking. That becomes poisonous. So no mobiles should enter the kitchen. So when you are cooking, you should be completely mindful, full of gratitude. Then the food becomes medicine. You see, in the Indian tradition, thousands of years, we never had, see, this allopathy and all just came 100 years ago. When the Britishers came, the medicines they brought in. But our history is more than 10,000 years. So what was the medicine in our civilization? Food is our medicine. In our civilization in India, food is the medicine. For winter, we have certain kind of food. For summer, we have certain kind of food. If you're having temperature, you have a certain kind of food. If you're running nose, you have a certain kind of food. There is no medicine, but food is the medicine. That is our culture. That is our ancient culture. But we forgot. We forgot everything. So, the right cooking and the right ingredients. A lot of herbs, a lot of amazing, wonderful spices, a lot of healing spices. So use all that combination and cook the food to the greatest possible taste. Cook mindfully. That becomes the sattvic food. That becomes the medicine. Okay. And some people have the habit of cooking in the morning and they keep it in the fridge and eat it in the night, and they eat the next day and they eat the day after. Some people, they cook food and keep it in the fridge for 2-3 days and eat. That is such a poisonous food. No energy in that. That creates more ill effects. So the food has to be consumed. The food has to be cooked fresh, and it has to be consumed within 3 hours of cooking. Then it has nice energy. And the food, when you're eating food, it has to be hot. When you're cooking food and when you're eating food, you should never eat cold food. Always eat hot food. Cooked food should be hot food. Okay, so all these things becomes sattvic food. The food has to be cooked and eaten immediately, hot. And when you're eating, you have to eat mindfully. So this adds to your health, my dear friends. And consume more fruits. You have to consume more and more fruits. You should slowly, day by day, you should reduce the cooked food and increase the fruits. In the future on the planet Earth, most of the people will be, I'm saying in another 20-30 years time, they will eat maybe once in a week for taste. The rest of the time, they'll be only on fruits because their vibrations are so high. Only the fruits match their vibration. Okay, so you have to increase your intake of fruits. That will add to your health factor. So all this constitute right food, my dear friends. And then there are other factors which contribute to your well-being also. For example, sleep. Sleep is also a very good, very important factor. You should have balanced sleep. That means you should not sleep too much. Don't sleep 8 hours, 10 hours, 12 hours. That will destroy your health. And don't sleep too little, 2 hours, 3 hours. Don't sleep. You should have a balanced sleep. You should listen to your body. If your body is tired, you have to give rest to the body. At the same time, sleep only sufficient amount of time. A non-meditator, 6 hours sufficient. If you are a meditator, regular meditator, 4 hours sufficient. So your sleep should be a balanced sleep. And also, don't stretch your sleep in a single go. If possible, break your sleep. For example, you can sleep 3 hours in the night and maybe 2 hours in the afternoon. It is called siesta in the afternoon. That is a very good sleep.
in the afternoon, when you sleep even for 1 hour, that will recharge your body a lot. It's called siesta. Have you heard of it? Siesta. So the sleep you have after having your lunch in the middle of the day, that is called siesta. So you have to split. Make sure you are not sleeping more than 3.5 hours at a single stretch. Because more than that, whatever the amount you sleep, you are losing energy. Only for the first 3.5 hours, you get energy. So you have to break the sleep into 2 patterns. Then that also contributes to your health. See, in the olden days, the people who are working, I don't know about North India, but in South India, everybody has the habit of siesta. During the lunch break, everybody sleep for half an hour. Even the workers, even today in South India, all the workers in the farm or even the construction workers, they work very hard from morning till afternoon. And in the afternoon, after having their food, they nap. They sleep in the fields under the tree or wherever they are working. They sleep for half an hour. That is called siesta. That contributes to your health. There is a research done and proved in the Western world that siesta helps to have a good health. Okay, so you need to have the right sleep. The right sleep is not sleeping too much. Sleep 3 hours, 3.5 hours maximum in the night. In the daytime, siesta for half an hour, 1 hour. That is perfect. If you are a meditator, that is perfect. And just imagine you are sleeping only 3.5 plus half an hour, 4 hours per day. The rest of the 20 hours are there for you to do whatever you want. And you will not feel tired because you are having a vibrant health. Okay, and you have the right food and you have the right sleep. And also, another factor which contributes to your health is you have to connect to the mother nature. You have to connect to the earth and you have to be grounded. So walking barefoot, you have to walk barefoot wherever it is. Whenever you are in nature, you have to walk barefoot. And that's why all the temples in, say again, I don't know about North India, but in South India, because North India has been invaded by the Mughals and a lot of cultural khichdi happened in North, but South, the culture is a little bit of intact. So in South India, you will see all the temples are on the hills. All the temples they build on the mountains and the hills. Because they wanted, and also they have a tradition that when you are going to the temple, when you're climbing the mountain, you should not wear chappals or shoes or slippers. You should walk barefoot. So that is the practice. So why they have kept that practice is because the mountains and the hills, they're full of nature, they're full of energy. Rocks, granites, mountains, they have a lot of energy. So when you're walking barefoot, you receive a lot of health. And all the temples, if you go to temples, ancient temples, you can see all the Panchabhutas are perfectly balanced. You have the trees energy, you have all the medicinal trees, and even the flooring, the flooring of the ancient temples, they're all full of granite stones. No cement, no mud, all stones, huge stones, granite stones, they're made of. Even the pillars are made of granite stones. So that when you're walking barefoot on the grass, on the beach, on the stones, and when you're trekking, when you're walking barefoot, that gives you a lot of, your feet is very sensitive to energy. So your feet absorbs energy from the Mother Earth, and that will contribute to your well-being. And in the olden days, most of the workers who are working in the field, they don't wear chappals. And also we have a tradition in South India that the people who are working in the fields, the farmers, they leave the slippers outside before they enter into the field. They respect. For them, the land is mother. The field is a sacred spot. It's their temple. Even in Bali, the tradition is still there because the Hinduism went from India to Bali thousands of years ago. If you go to Bali, in every field, there is a small temple. And before the farmer enters the field, so he leaves the chappals outside the field and he makes a prayer and then he enters the field.
So he is living a healthy life because he is connected. He's on the barefoot. He's connected to the Mother Earth. So no matter whatever the hard work he does, he's not tired. And he's so happy. And they live a happy life, a healthy life till 90 years, 100 years, whatever the time they want. So walking barefoot is very, very important. And another factor which contributes to the health, as we already discussed about it plenty of times, is taking long showers. Take the water energy, enjoy your shower, take long showers. And whenever you get a chance to visit nature bodies, water bodies, nature, like waterfalls, rivers, beaches, spend time in the water. Even in the swimming pools, spend more time in the water. The water rejuvenates you. The water rejuvenates, right? Especially the nature bodies, rivers, lakes, waterfalls, beaches. Amazing energy. That water emotionally heals you, emotionally rejuvenates you. Okay. And finally, never think of old age. Don't think I'm getting old. I might get some illness. Never think of that way, because if you are thinking of old age, then you will become old. If you think of illness, you will get illness. You have to be very careful. The thought power, we discussed about it yesterday. The power of thought is very powerful. As you think, you become. This is the law. As you think, you become. So never think of old age. You should never think of old age. You should always feel that, yes, you are healthy, you are young, you are vibrant. There is no old age for you. That should be the thinking process. Then you will never become old. Then you can live for hundreds and hundreds of years. Why not? If all the yogis can live, why can't we live? Even in our mythology, or even in our Puranas and stories like Ramayana, the epics of Ramayana and Mahabharata, we have a lot of Chiranjeevis, right? Aswatthama is a Chiranjeevi. Hanuman is a Chiranjeevi. That means there is no death for them. They live eternally. That is possible. They are the living examples to say that it is possible. So never think of old age, my dear friends. Never think of old age. And do more and more meditation. And as you do more meditation, all your karmas, you learn the lessons, and all your karmas, you come out of all the karmic loops, and you will not do any bad karmas. The more you do meditation, the more you will never do bad karmas. But you might ask, sir, what about the karmas I have done in all the past lives? How do I let go of that karmas? Then do good karmas. Do more service. When you do meditation and when you do more good karmas, then all your karmic baggage is getting burnt, and you become free once for all from your karmic baggage. And this lifetime and this moment is in your hands, and it is possible. Right now it is possible. Don't think you will do it in the next lifetime. This moment is possible. This moment you can let go of all your karmas by doing sincerely more meditation, by doing more service, more good karmas. And finally, we have pyramids, right? So store the water under a pyramid, all the fruits, all the vegetables under the pyramids. Okay, so the pyramid energy also recharges the water, the food, and you should use pyramid energy for everything. When you're studying, when you're sleeping, everything can be done inside the pyramid. Then it increases your life force energy. You become very vibrant, you become very healthy. I have done a lot of experiments with the pyramids. I have slept inside a pyramid, I slept outside a pyramid. When I slept inside a pyramid, I can sleep only 1 hour maximum. I cannot sleep more than that because my body is fully recharged. Only 1 hour, your body is recharged. If you are a meditator, even if you are for a normal person, even if you are not a meditator, you can get the energy of the pyramid. That will help you in meditation. Okay, and the more and more you sleep under a pyramid, the more you cannot, you might have some situations where you might be a vegetarian, but some of your family members are not vegetarian. But you hang the pyramids wherever they are sleeping, naturally they become vegetarian. The more they are inside a pyramid energy, they cannot eat meat. Slowly they will give up. So pyramid energy has that beauty also.
And especially water, you should store overnight water inside a pyramid. And fruits, everything you have to keep in the pyramid, and do more meditation in the pyramid. So this is the way to take care of your health. And when your health is taken care, you are a wealthy person, you are a rich person. A person with a good health is wealthy and rich person. This is the real health. This is the real wealth. Okay, so we have discussed about physical health, how the physical health we have to take care. First of all, you have to understand the body. And then once you understand how precious it is, then you are inspired, you are motivated to take care of it. And emotional health, psychological health, spiritual health is what we are doing in this Gyaan Bharat. In the Gyaan Bharat, we are doing a lot of this wisdom sharing. So your spiritual health is taken care. When the spiritual health is taken care, then your emotional health is taken care. You do more meditation, you practice mauna, eat sattvic food, read a lot of books, then you will have a holistic health. Your spiritual health is taken care, your emotional health is taken care, your psychological health is taken care, and your physical health is taken care. So without the spiritual health, physical health is not possible, my dear friends. With the spiritual health, 100% you will have physical health, emotional health, psychological health, and you have a life with holistic health, and you will have a vibrant life, you will have a happy life. That is the rule on the planet Earth. Here the game on the planet Earth is, if you have a healthy body, you can have a healthy life. So to have a healthy body, you need to have a healthy emotion, and to have a healthy emotion, you need to have a healthy psychological health should be healthy, and to have a psychological and mental health, then your spiritual health should be there. So your spiritual health is the root and your physical health is the fruit. Everything is interdependent. Okay. So I hope you got inspired and enjoyed the session. And this has to be integrated in your everyday life. Every day, this has to be integrated. Okay. If you have any questions, I may take the questions. I have to leave in 10 minutes. Thank you, sir. So thank you. बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सुपर सर. कुछ एक चीजें हम भी नहीं जानते थे. स्लीप के बारे में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे भी. तो क्या कंफ्यूजन मैडम? मुझे लगता था कि एक स्ट्रेच में सोना चाहिए 4 to 5 hours, 5 hours at least. Try this experiment, 3.5 hours in one stretch, and then try siesta. You do this experiment. Patri sir also told about siesta, because one episode I translated of him. Not Patri sir, madam. It is there for 10,000 years in our Indian tradition. But he mentioned about the siesta कि आपकी जब आप दोपहर को सोते हैं तो आपकी एस्ट्रल बॉडी जाती है और वो रेस्ट एनर्जी लेके आती है, ऐसा कुछ था. So siesta is very simple. Eat, enjoy your lunch and sleep. Short nap, short, brief power nap. Yes. Yes, sir. Some corporate office organize it, no, sir? I have heard. In Google, yes, Google. कि कुछ nap के लिए 20 minutes दे रहे हैं China में. Because yes, many organizations, they have done the research. Yes. And they give a long lunch break. Yes. But even when I was, you see, the interesting thing is when I was working in Australia, everybody takes half an hour break, 1 hour break. But I report, because I was a contractor, so I report to my general manager. So I told my general, I needed 2 hours break. Okay, if you want, I'll compensate but I will take 2 hours lunch break. So I will arams. Other people, they enjoy the food, they eat the food like a machine. They eat the food, and then hurry burry. Then they keep watching their mobiles and texting their family and friends. But I used to enjoy my food aram se, and then lie down, sleep for 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, and then go fresh to the office. And fatafat, I'll finish off the work. Whatever my colleagues used to work in 4 hours, I used to finish in 1 hour only.
So where there is a will, there is a way. In Australia, I was doing siesta. Yes. Sir, from tomorrow, sir, we will follow siesta. Siesta, na? Is siesta? Yes. Siesta. Yeah, noun can be pronounced. Yes. Okay. Yes. Halika ji. बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है ना. टाइम कम है सर का, तो जितना क्वेश्चंस के द्वारा आंसर मिल सके लोगों को. सर मैं भी सर also do 3 hours meditation, but after that see 6 hours sleep at least. What is the question? Minimum 6 hours. क्वेश्चन बताइए आप. अभी अपने एक्सपीरियंस मत बताइए. तो सर फ्रेश नहीं था तो क्या करेंगे? Okay, you see, your body has its own memory. Your body has been used to sleeping for 8 hours, 6 hours, and suddenly you want to change it to 3 hours, then your body doesn't cooperate because the body has its own body biomemory, right? So it takes time, it takes with practice. But even it is mentioned in the Seth book, the Seth wisdom, if you are sleeping for 6 hours, it is the first 3 hours of sleep is the sleep which recharges your body to the full extent, 100% recharged. Then after that, every subsequent hour you sleep, the energy is going down. So you lose energy. Okay. So, but you've been, especially women, see, different men bodies, the biology of the men is different and the biology of the woman is different. So generally, woman likes to sleep more. Men likes to sleep less. So in my own experiment, what I have realized is 3 hours of sleep is sufficient for me. 3 hours of sleep is really sufficient. I have experimented myself. But if you are a kind of, especially a female, especially a woman, who likes to enjoy the sleep, cuddling the teddy bears and this and that, so then you don't want to get up after 3-4 hours. You want to lie down for 6 hours, 8, because psychologically you feel unless I sleep 6 hours, I'm not recharged. So that is more of your mind over matter. That is your psychology. But if you're in a neutral space and you experiment, 4 hours of sleep, okay, between 3.5 hours to 4 hours of sleep, you get fully recharged. You can do this experiment. Okay. Next, I'll ask Chand Kapoor. Yes, sir. Yes. I want to know what is negative ions. I have not understood it. What is? Negative ions. You told us, sir. Negative, that is a terminology. See, that is a terminology. They use the word negative. The ions, that is the terminology they describe for the microparticles in the space. Yes. In the surrounding. So more negative ions means the place is fresh, healthy, vibrant. Okay. So that is the terminology they use in the scientific terms. All right. And one more question, small, sir. About this sleep only, means it is same for the young and the old people? It is, maybe it varies. See, different people have different bodies and different belief systems, and they come from different cultures. So what I'm saying is just an average figure of 3 to 4 hours. But you listen to your body. The more you do meditation, the more naturally your sleep reduces. It happens to everybody, young people, small children, old people. It happens very naturally. The sleep naturally reduces. So whatever is the time, the sleep needed for you. See, when I spoke about the health, I spoke about balanced sleep, right? So what I mean by balanced sleep is, don't fix in your mind that I need to sleep 8 hours. No, don't fix it in your mind. Just be sensitive to your body. Listen to your body. If your body needs 6 hours sleep, sleep. Some days your body needs only 3 hours. Some days your body needs 7 hours. So follow your body. Be sensitive to your body. That is balanced sleep. You are aware, alert all the time to listen to your body needs, and you're going with the flow. So that is a balanced sleep. So in general, balanced sleep means you are not sleeping too little and tiring your body, and you're not sleeping too much. So go for your own balance. Everybody has their own balance. So you have to look for your own, what is the time of the sleep, which is a healthy sleep, a balanced sleep for you.
So only you have to determine it. Thank you very Okay, much. it is like the shoe size. One shoe size doesn't fit all the feet. Okay, your shoe size is different. Another person's shoe size is different. According to their own feet, the size varies similarly. According to your own biology, body biology, according to your own belief system, the sleep differs. Thanks a lot, sir. Yes. Okay. Ritesh. Yeah, namaste, sir. Yes, sir. It was a very wonderful presentation, sir. I learned a lot of things. I have got two questions. Yeah. First one is our biological clock different for different people? Suppose naturally. What is biological clock? Biological clock means, suppose if you have got used to getting up at 4 a.m. for 6 months, then naturally your body tells you, hey, it's time to wake up, and you'll automatically wake up. So biological clock is nothing but the clock of your own, your body has memory, your body cells have memory. So what you are used to, that becomes your biological clock. That's all. You change the habit, the clock also changes. Okay, so it is possible to change the habit. Yes. Okay. Yes. Okay. And my second question is, I'll give you an example. Yes. I'll give you an example. See, whether you want to get up at 4 o'clock or 5 o'clock or 6 o'clock, it doesn't depend on your body biology. That depends on your free will. Whatever time you want to get up, you can get up. Okay. But yes, if you are used to getting up in a certain time, then it is a little difficult. But only 1 or 2 days after that, your body clock automatically changes. I'll give you an example. If you are traveling from east to west, you take a 30-40 hours flight, you go to United States from India, then it's exactly 12 hours opposite. So the daytime is night here, night is day there. So there is a lot of jet lag. So whatever you are used to, for example, you are used to sleeping in India in the night, but that is a daytime in America. And the night in America is day here. So it takes a couple of days for your body to adjust. Your body totally adjusts. 12 hours, not 1 hour, 2 hours, not 1 hour, 2 hours, completely day to night, night to day. Your body gets adjusted in 2 days. Okay. Okay. Understood, sir. And my second question is, sir, especially for our physical well-being, our body requires various kinds of minerals and vitamins. So, and you spoke about eating a lot of fruits. And as we know that currently the quality of the fruits are deteriorating because of the use of chemicals. So my question is, through cosmic energy, if I'm getting cosmic energy, do I need to worry about this vitamins and minerals? Or that is why I said the first and the most important point you have to remind yourself every day is you are not the body, you are not the atoms, the molecules. Okay, you are not that. You have a living example of so many yogi. There are more than 20,000 people on the planet Earth now who are living only on prana. They don't take any minerals, they don't take any supplements, but they're living a vibrant life. It is possible. Okay. It is possible. Okay. And you don't need to worry too much into the minerals and all those atoms and molecules. Don't need to worry about it. Focus on your spiritual health. Then your physical health automatically follows. You should have the right understanding of life. That is why I called you should know the life science, how to live the life, the art of living. Once you know the life science, then the health comes naturally. Okay. Understood, sir. Thank you so much. Okay. Sheetal. Every day you ask a question. So how karma affects manifestation? So thank God I didn't ask morning. So morning also I was there, but I slept. Okay. How karma affect my karma? You see, it is like asking, if you don't have money in your bank account, how will it affect you building a house? Okay. Yes, sir. If you don't have money in your bank account, you cannot even build a house in the first place.
So when you're having certain karmic baggage, so what does that mean? When you're having a certain karmic baggage, what that means is you are operating from a limited space. You're operating from limited possibilities. This karmic baggage is there to learn certain lessons. Until you learn certain lessons, until you finish that lessons, you cannot operate in a bigger space. Do you understand? Karma is not a punishment. Karma is there for you to learn the lessons. Okay, you want to manifest what you want to manifest. Whatever you want to manifest, you can manifest. But you need to have that energy. Yesterday, I spoke about it. We are energy beings. We are knowledge beings. Right? And we are the beings of free will. So you have to have all this right combination. That is the formula for manifestation. But when you're having a certain karmic baggage, then all those three factors doesn't help you to manifest what you want. You might have a desire, but that doesn't mean all your desires are going to manifest. Because the ingredients should be there. Okay, so karma definitely affects the manifestation. Karma is there to teach you lessons, and you cannot manifest whatever you want, but you can manifest whatever you need. There is a difference between need and want. You can 100% manifest whatever you need. Karma doesn't interfere in that. Because what you need is what you already planned in your soul stage. Before you are born, you have already planned what you need. So according to that planning, you will manifest. So karma doesn't interfere because that is part of your soul planning, what you need. But what you want out of your own desires, what you want, then that means you need to have a lot of currency. Energy, the currency. In the physical world, the currency is money. But in the spiritual world, the currency is energy, good karmas. The more good karmas you have, the more you can manifest anything you want. Can you give examples of good karma, like only charity? I have already spoken enough of karmas. So anything, yeah, anything. See, anything which helps you and anything which helps another person is a good karma fundamentally. Okay, anything which helps another person, your actions that is helping another person is a good karma. Again, there are different levels. I think I spoke about the service, right? I specifically spoke about a service. I think you are not listening or probably sleeping in that particular day. I spoke about different levels of service. A person who takes care of his pleasures and everything, and in his free time, he does the service. And then a person who sacrifices his leisure and then do service. And then the person who full-time does service. So the more you do service, the more good karma you get. And if you ask me, sir, what is the highest form of good karma? The highest form of good karma is to teach meditation. Teaching meditation is the highest good karma of all karmas. Teaching meditation, teaching spiritual science, helping another person become an enlightened, helping another person evolve. That is the greatest good karma. And if you can't teach personally, at least help the people who are teaching. That also adds to the good karma. That is also highest good karma. You are teaching or you are supporting an individual or an organization who are already doing it. That is also good karma. Okay, but in general, any karma you do which helps another person is a good karma. Yes, sir. You got it? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. See, it's been a little interesting because we have covered so many things, so many weeks, and you're asking, going back and asking a question which we have already covered many weeks ago. I just want to relate this. So what is your question? Fundamentally, you want to do good karmas and you want to make sure you want to do the highest good karma, and what is the way? That is your personal question.
So my personal question was, you spoke about manifestation. Manifestation, you said we can manifest anything, but I know I wanted to See, manifest I told something. you very clearly, if you have fear, you cannot manifest. If you have fear, your thought power reduces. Did I told you or not yesterday? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I mentioned. So where is this fear coming from? This fear is because of your karma. You see how the karma is affecting. If you have fear, your thought power reduces. Your intent, the power of intent reduces if you have fear. And you have that fear because of your karma. So the karma is impacting your manifestation. It's a very straightforward answer. Yes, sir. Got Yes, it? sir. Yes, sir. So one new question. New question. Okay, बोलिए. मैं decide करूँगा new or old. Sir, sir, internationally in that Hawaii, they teach about Ho'oponopono. Have you heard that? Yes, yes. So what do you say about that? Yeah, that is a good technique. That is a good technique for a non-meditator. Yes, that is a good technique. See, everything has its own benefits. Everything has its own benefits. Ho'oponopono is also a good technique if you are having a lot of emotional baggage. You want to use that technique, you can use that technique. But if you are a sincere meditator, you don't need any techniques. Yes, sir. Ho'oponopono has its own benefits. But if you are so sincere in meditation and you know the fact you create your own reality, Apo Deepo Bhava, you know that, then why you need Ho'oponopono? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. These are all very fancy stuff, Ho'oponopono, chakra healing, kundalini activation, astral surgery, DNA activation, channeling. In the name of channeling, great tamasha is happening. People don't even know whether it's a real master or a fake master coming in the name of channeling. In my life, I have experienced so many fake channelers and fake channeling masters. There were many instances in the middle in Singapore. In the public stage, there is a great channeler, well-known channeler, written many, many books. I don't want to mention the name. Written many books, famous all over the world. They were channeling, and they said there is no karma. And in the channeling, the energy said, "Oh, there is no karma. Only if you believe in karma, there is karma. Or else there is no karma." I told them, "You better exit the body and go out. You are not eligible to even to come to the planet." So I was fighting with that channeling energy. I said, "You stupid, you don't know anything about basic common sense, and you say there is no karma, so you can kill the animals and eat, and there is no karma. This is what you are teaching on the planet Earth. Get out of this planet Earth." So immediately the person dropped and the energy left. So many stupid people are channeling stupid energies, not masters. Okay. These are all fancy stuff. Don't go to the fancy. Stick to the truth. Truth is simple, straightforward. Stick to the truth. Okay. Next. Rita. You're unmute, madam. Unmute करिए रीटा जी. Okay, I have to go in 3 minutes sharp. So. Good afternoon, sir. Yes, madam. Okay, सर मुझे फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के लिए पूछना था आपको. मैं मेडिटेशन करती हूँ और मुझे अभी बहुत बहुत ज्यादा ही लेग पेन था, तो फिजिकल बॉडी इतना अफेक्ट किया कि आई कांट मेडिटेट. That's all because of your karma, madam. When you are meditating, there is a lot of healing happening. A lot of karmic baggage is reducing. So when you're going through the healing process, you get body pains naturally. You have to bear the pains. You have to bear the body pains and continue meditation. Your spiritual body is nothing but your atma, your soul. And your physical body is what you see in front of your mirror. Okay. And another one question. Sir, आपने जो no? Okay. No problem. It's okay. Thank you, sir. Thank you. No problem. Thank you very much. All right, friends, I need to go. I have another session. I need to log in. So, sab logon ko dhanyawad. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. मुझे थोड़े पेजेस बनाने तो बहुत पेजेस हो गए हैं ये लोग तो
आप बहुत अच्छा बताए हैं। कुछ एक चीजें मालूम थी स्लीप के बारे में, तो मुझे भी थोड़ा डाउट था, पूरा क्लियर हो गया। मैंने सेहत मास्टर का सुना है 4 घंटे सोने का, पर मुझे लगता था कि बॉडी 4 घंटे में कैसे रिचार्ज होगी, अरे बाबा नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 5-6 दिन अगर मैं अच्छे से नहीं सोती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है। बट नाउ आज से मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट ट्रांसलेशन सुनते हैं और मीटिंग लीव करते हैं। तो आज सर ने जो कहा हेल्थ इज वेल्थ, हमारी पहला सुख निरोगी काया, तो उन्होंने कहा है कि बचपन से ही हम सुनते हैं कि पैसा हमको खुशी देता है, कार प्रॉपर्टी ये सब हमारी सफलता जो है हमको खुश देता है, पर आपकी जो हेल्थ है वही आपको खुश रखती है। हमारी असली संपदा हमारी हेल्थ है। और जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर जो फिजिकल हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, उसके अलावा मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहा हूँ। होलिस्टिक हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ आती है। तो हेल्थ के इन सभी डायमेंशंस को जब हम समझ जाएंगे तो हम होलिस्टिक हेल्थ को समझ जाएंगे। फंडामेंटल ये है कि आप फिजिकल हेल्थ को क्या समझते हैं। पृथ्वी पर हमारे को ये जरूरी होता है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं, तभी हमारी लाइफ, हमारा जीवन वाइब्रेंट रहेगा। पर मानवता ने अपनी खुद की मूर्खता के कारण या बेवकूफियों के कारण बहुत सी बीमारियां और कष्टों को न्योता दे दिया है, और शरीर बहुत समय तक के स्वस्थ नहीं रह पाता और हेल्पलेस होके दुर्भाग्यवश उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। जबकि स्टार बीइंग्स के लोग 200 से 300 वर्ष तक के जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने पसंद से अपना चुनाव करके अपने शरीर को छोड़ते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर भी कुछ योगी लोग 100 साल से अधिक रह पाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी मृत्यु है। ये ही रास्ता है जीवन जीने का। हमको कभी भी हेल्पलेस, असहाय होके नहीं मरना है। जब तक हमारा काम होता है, काम करते हैं, मतलब हमारा काम पृथ्वी पर रहेगा, हम तब तक ये काम करें और तब अपने शरीर को छोड़े, पर तब तक के हमको लास्ट ब्रेथ तक के, आखिरी सांस तक के स्वस्थ रहना है। मानवता को शरीर की समझ ही नहीं है, बॉडी साइंस नहीं मालूम है, उसको लाइफ साइंस भी नहीं मालूम है। लाइफ साइंस क्या होता है? आर्ट ऑफ लिविंग, कि कैसे जिया जाए। इसी के द्वारा ही इसी से वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसलिए हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग को नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अज्ञानता है, हमारे पास अहंकार है और हमारे पास आलस्य है। यही हमारे दुखों का और बीमारियों का कारण है। सिर्फ मैं ही शरीर हूं, मैं सेल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स, इन सब से बना हूं, ये जब तक के आप सोचते रहेंगे तब तक के आपके लिए कष्ट अनिवार्य रहेंगे। आपके जो सपोर्टिंग फैक्टर्स भी हैं, इन सब के अलावा जो आपके सेल्स, मॉलिक्यूल्स, इनके अलावा भी हैं फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति और आपकी क्रिया शक्ति। ये सभी शक्तियां बैकग्राउंड में रहती हैं, मतलब पर्दे के पीछे रहती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, और फिजिकल बॉडी में पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं, पर ये कारण पीछे होता है जिसे हम नहीं जान पाते। जैसे कि आप कॉज एंड इफेक्ट मानते हैं, कर्म कार्य कारण का सिद्धांत, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप एक घर बनाना चाहते हैं तो पहले आप उसकी ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर इंजीनियर को बुलाते हैं, मजदूरों को बुलाते हैं, स्टाफ रखते हैं, जितने भी मैन पावर आप यूज करते हैं, तब जाके आपका घर बनता है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी कि मुझे घर बनाना चाहिए, तभी आप घर बना पाते हैं। नॉलेज आप इंजीनियर और टेक्निक के पास से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सालों तक के पढ़ाई करके इसके बारे में अच्छे से तकनीकी ज्ञान लिया है और वो आपके घर बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। क्रिया शक्ति हमारी जो है, वो हम ब्रिक, सीमेंट और जितने भी लोग हैं उनके कंबाइंड फोर्स के साथ हमारा जो परिणाम, एक आउटपुट आता है, वो हमारा घर होता है। तो जो भी कारण है, हमने जो भी चीजें लोगों के बारे में बताया है, वो सभी कारण है जो स्क्रीन के बिहाइंड है, पर आपके सामने एक घर इफेक्ट के रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी भी होती है।
हमारी बॉडी मेल और फीमेल के मिलन से होती है। मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग जब फर्टिलाइज होते हैं तब एक जाइगोट बनता है। जाइगोट में एक ही सेल होते हैं, पर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके माँ के गर्भ में धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, ऑर्गन्स बनते जाते हैं। ये 9 महीने में पूरा कंप्लीट होता है। तो सिर्फ एटम मॉलिक्यूल्स अपने आप मल्टीप्लाई नहीं होते, उनके में एक सोल, जो आत्मा जिस शरीर में आने वाली रहती है, वो पहले अपने माता पिता का चुनाव करती है। बिल्कुल जैसे हम घर में गृह प्रवेश की पार्टी रखते हैं, वैसे ही सोल भी बिल्कुल अपने घर का निर्माण करती है। तो सोल कॉजल वर्ल्ड में अपनी प्लानिंग बनाती है। जैसे हम आर्किटेक्ट के पास जाके ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वहां पे वो प्लानिंग बनाते रहती है। फिर अपने प्रारब्ध कर्मा की सोल प्लान में कैसे मैं शरीर लूंगा, अपने प्रारब्ध कर्मा के अनुसार कौन कौन से मेरे शरीर में डिफेक्ट्स होंगे, क्या मेरा शरीर स्ट्रांग रहेगा या नाजुक रहेगा, जो भी अपने शरीर का प्लान है वो अपने एस्ट्रल कॉजल वर्ल्ड में करती है, अपने कर्मा और प्रारब्ध और अपनी प्लानिंग के अनुसार। फिर जब वो गर्भ धारण होता है तो सेल्स जो मल्टीप्लाइड करते हैं फर्टिलाइज होके, तो वो बेबी स्टेज बनने तक के अपने आप नहीं होता, बहुत सारे नेचर स्पिरिट्स एलिमेंट्स उनकी मदद करते हैं। वो बिल्कुल आपके घर बनाने वाले वर्कर्स के समान है, जो ये बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। ये सब साइंस को डॉक्टर या कोई और भी सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, सिर्फ एक स्पिरिचुअल आदमी जान सकता है कि कितनी मेहनत से एक गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है। मास्टर्स, नेचर स्पिरिट, सोल स्वयं भी निरीक्षण करती है अपने हायर वर्ल्ड से कि मेरे शरीर का कैसे निर्माण हो रहा है, और वो सोल शरीर निर्माण में मदद भी करती है। और जन्म के समय ही सोल एंटर करती है। जैसे ही शिशु पहली सांस लेता है तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हाउस वार्मिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश की हम सेरेमनी करते हैं, अपने नए घर में एंटर करता है, अपने शरीर में एंटर करता है। पर कुछ आत्माएं उस समय तैयार नहीं रहती हैं जन्म लेने के लिए, तब वो मिसकैरेज के रूप में उस गर्भ को टर्मिनेट कर देती हैं और चली जाती हैं। तो नया घर सोल के लिए बॉडी होता है जिसमें वो एंटर करती हैं। तो बॉडी बन तो गया, बॉडी बिल्ड हो गई, पर अब उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जो भी हमारे लिवर, किडनी, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको भी काम करते रहना पड़ता है, जो नेचर स्पिरिट्स उनकी मदद करते हैं। जैसे घर के पीछे कुछ एक फील्ड फोर्स होता है, वैसे ही हमारे हर ऑर्गन के पीछे भी एक फील्ड फोर्स, एक वर्क फोर्स काम करती है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपको मालूम चलना चाहिए कि जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं, आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो 2 घंटे में आप मूवी देख के आ जाते हैं, पर उसको बनाने में कई हजारों नहीं, कई साल लगते हैं और कई हजारों लोगों की मेहनत उसमें आती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी जो बॉडी बनी है, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत से इस शरीर को बुना गया है। बहुत प्यारा एक कबीर ने बोला है ना, झीनी झीनी सी बुनी रे चदरिया, कि कितना झीना काम किया गया है 9 महीने में गर्भ में एक शिशु के निर्माण में। चलिए अभी कबीर को साइड में रख देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बॉडी को बनाने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, तभी आप अपने इस शरीर की कीमत को पहचान पाएंगे। आप अभी अपनी हेल्थ को काफी हद तक के डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, पर अब जब आप इसको सीख रहे हैं तो आपका पहला मौलिक क्वेश्चन होना चाहिए कि अब हम स्वस्थ कैसे रहें। अक्सर एक दूसरे को लोग कहते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखो, लुक आफ्टर, टेक केयर। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि जब तक कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी ही आप पृथ्वी पर रहने के योग्य होंगे, वरना बाय बाय। तो हाउ टू टेक केयर, कैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखें? तो हम जो अपने को शरीर मान रहे हैं, जबकि हम आत्मा है, प्योर चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य है जो कि इस शरीर में है। हम सिर्फ एक विजिटर है, मेहमान है इस शरीर में, और हमारा जैसे काम खत्म हो जाएगा हम अपने ट्रू होम वापस चले जाएंगे। हर आत्मा अपना जीवन काल के वर्ष चुनती है कि कब तक के उसको पृथ्वी पर रहना है।
और कैसे रहना है, आखिरी सांस तक के उसको स्वस्थ रहना है या बीमारी के साथ अपने जीवन को काटना है, वो यहाँ पर सोल खुद चुनते रहती है। हर समय हमको अपने आप को रोज याद दिलाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में आई हूं। हर रोज मिरर के सामने अपने को बार बार रिमाइंड कराते रहिए। जितना आप अपने को ये रिमाइंड करते जाएंगे उतनी आपकी समझ बढ़ते जाएगी कि मैं आत्मा हूं, और उतनी ही आपकी आत्मशक्ति बढ़ते जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी है जो आपको हेल्दी रख सकती है। इसे याद रखने से आपकी बार बार आत्मा हूं कर याद रखने से आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। तो वेलबींग तो जीवित रखने के लिए दूसरा पॉइंट, पहला तो है कि आपको रिमेम्बर कराना है कि मैं आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट बताए हैं सर ने कि जीवित रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा प्राण शक्ति की जरूरत पड़ती है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगे उतना प्राण शक्ति लेते जाएंगे। आप बिना मेडिटेशन के भी ब्रेथ जब लेते हैं, सांस लेते हैं, तब आप ऑक्सीजन लेते हैं, तब प्राणा लेते हैं, पर मेडिटेशन में आप उस प्राण शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जीवित बनाए रखने के लिए प्राण शक्ति बहुत जरूरी है। बोस्निया के पिरामिड के बारे में बताया कि वहां टनल्स होते हैं, वहां पर नेगेटिव आयंस जो प्राण शक्ति के सूचक होते हैं या निर्धारित करते हैं उस प्राण शक्ति को, वो बहुत होते हैं वहां के पिरामिड के टनल्स में। जितने ज्यादा नेगेटिव आयंस रहेंगे उतनी ही वो जगह वाइब्रेंट, जीवित और प्राण शक्ति से भरपूर रहेगी। विलेज में ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा फॉरेस्ट में होते हैं। पिरामिड में भी अगर एक अच्छा मेगा पिरामिड ले तो वहां पे 10,000 से ज्यादा नेगेटिव आयंस रहते हैं, पर बोस्निया के पिरामिड में उनकी टनल्स में 20,000 से ज्यादा नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर आप वाटरफॉल में नहाते हैं, जलप्रपात में, तो भी आप बहुत फ्रेश और वाइब्रेंट महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें भी आप प्राण शक्ति ले रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करते जाइए, जो दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन, उसके साथ आप नेचर को भी जोड़ लीजिए। तीसरा पॉइंट है पानी। हमारा शरीर 80% पानी से बना हुआ है। ये इसको जल शक्ति कहते हैं। बहुत ज्यादा हमको पानी पीना चाहिए, कम से कम 5 लीटर रोज पानी हमको पीना चाहिए। जितना हम पानी पीते जाएंगे उतनी ही हमारी हेल्थ वाइब्रेंट रहेगी। मैंने रिट्रीट में भी आपको पानी की ज्यादा प्रैक्टिस कराई कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा और आप वाइब्रेंट रहेंगे। आप लोगों को लगता है कि हम फूड से एनर्जी लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। फूड बहुत ही मिनिमम देती है एनर्जी ना। तो सर ने बोला कि फूड को आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं। इसे शक्ति के लिए आप कभी भी कंसिडर मत करिए। कई लोग बिना खाना खाए सिर्फ प्राणा के ऊपर रहते हैं। तो खाना अनिवार्य नहीं है, ये हम स्वाद के लिए खाते हैं। पर लोगों को अक्सर डर या फोबिया रहता है कि यदि वो खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे। तो आत्मशक्ति आप में है, प्राण शक्ति आप में है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। प्रकृति ने इतनी सुंदर फल और सब्जी, मसाले, हर चीज हमको प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। पर फूड, कुक्ड फूड आपके लिए अनिवार्य नहीं है। सही खाना हमारी हेल्थ में मदद करता है, अच्छी हेल्थ बनाने में मदद करता है। नहीं तो अगर हम सही फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट के लिए कहा है सर ने, आपको सात्विक फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड जो लव और ग्रेटिट्यूड से आ रहा हो। नॉनवेज फूड जिसमें पेन और सफरिंग है, वैसा खाना आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। प्लांट बहुत ही लव और ग्रेटिट्यूड से सब्जियां और फल हमें देते हैं, तो आप उनका भोजन कर सकते हैं। पर तभी खाना है जब आपको भूख लगे। आप घड़ी को देखकर कभी भी खाना नहीं खाएं। कई लोग घड़ी को देखकर अपने पेट में खाना ठूसते रहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जब आपका शरीर मांगे तभी आप खाइए, नहीं तो ये बैड हैबिट को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना है। और कितना खाना है? 3/4 आपको, आपका स्टमक भरा होना चाहिए। 100% आप परभेट करके खाना नहीं खाइए, इससे आपकी हेल्थ खराब होगी। हमेशा 25% आपका खाना पेट खाली रहना चाहिए। हमेशा थोड़ी भूख आप में रहनी चाहिए जब आप खाना बंद कर दें। वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। और कुकिंग को हमको बहुत ही माइंडफुली करना चाहिए। लव और ग्रेटिट्यूड के साथ हमको
खाना पकाना चाहिए। मोबाइल पर बात करते समय या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग करते समय हमें नहीं खाना है। सिर्फ खाना बनाने की उस क्रिया को एंजॉय करते हुए हमें खाना बनाना है, तब वो खाना हमारे लिए एक मेडिसिन हो जाता है। हमारी जो सभ्यता है वो भोजन ही हमारी दवाई था, पर जब ब्रिटिश साम्राज्य आए तो वो दवाई भी हमारे सभ्यता में लेके आए, जबकि दवाई हमारे कल्चर में नहीं है। हम अपने जीवन को जीना भूल गए हैं और भोजन को सही तरीके से लेना भूल गए हैं, इसीलिए हमें मेडिसिन की आवश्यकता होती है। राइट कुकिंग और राइट इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी सामग्री है वो बिल्कुल अच्छी, सात्विक, अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से पकाया गया हो, माइंडफुली पकाया गया हो, तब आपका खाना सबसे ज्यादा अमृत के समान टेस्ट करता है। खाना बनाकर कई लोग फ्रिज में रख देते हैं और रात को खाते हैं, कई घंटों के बाद या 2-3 दिन के बाद खाते हैं, तो ये खाना एक जहर के समान है और इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। आपके कुकिंग के 3 घंटे के भीतर आपको खाना खा लेना चाहिए और खाना हमेशा गर्म ही खाना चाहिए, ठंडा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अर्थात ठंडा और बासी खाना हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जब खाते हैं तभी भी हमको माइंडफुल होकर, एकाग्र होकर हमको खाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हमको फ्रूट्स खाने चाहिए और कुक्ड फूड की मात्रा अपने जीवन में कम करते जाना चाहिए। सर ने कहा है कि हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा, चूंकि अभी एनर्जी बढ़ रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों की वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि लोग सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे, हफ्ते में शायद वो सिर्फ एक ही बार खाएंगे। और जो 3 फैक्टर बता दी हूँ मैंने, और इसके बाद का एक जो फैक्टर है वो है नींद। आपको नींद बैलेंस लेनी चाहिए, आपको अपने शरीर की सुनना चाहिए कि उसको कितने घंटे नींद की जरूरत है। नॉर्मली लोग 6 घंटा से लेके 10 घंटे तक के सुनते हैं, पर यदि आप नॉर्मल हैं और मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो 4 घंटे की नींद आपके लिए सफिशिएंट है, और आप इस नींद को स्प्लिट के मतलब तोड़कर भी ले सकते हैं। आप इसे 3 घंटा रात में सोइए और 2 घंटा दोपहर में सोइए। दोपहर को सोना बहुत अच्छा होता है, जिसे सिस्टा कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, परंतु साउथ इंडिया में सिस्टा को बहुत मानते हैं। सभी वर्कर, सभी लोग यहाँ पर दोपहर को खाना खाने के बाद सोते हैं, और ये जो आधे 1 घंटे का जो नैप है, झपकी है, वो बहुत फायदेमंद होती है। उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन वालों को 4 घंटा ही सोना जरूरी है। इसलिए कहा है क्योंकि हम जब सोते हैं तब शुरू के 3 से 3.5 घंटा ही हम एनर्जी लेते हैं, बाकी टाइम हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है। ये अब रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है। अगर आप कम सोएंगे तो आपके पास काम करने का ज्यादा समय रहेगा। और इसके साथ ही एक और फैक्टर है नींद के अलावा, अपनी मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए। जैसे फूड, आत्मशक्ति, वो सब बता रही थी, आप लोग नोट कर दिए ना। तो फैक्टर एक और है मदर अर्थ से कनेक्ट होना। आपको नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए, और साउथ में तो टेम्पल्स भी हिल्स में होते थे, ताकि नंगे पैर लोग इतना दूर चलकर फिर जाएं, और जब तक के वो जाएंगे उसके आसपास माउंटेन, वैली, नेचर, उन सब की भी वो एनर्जी को ले, ताकि एनर्जी को बढ़ाते हुए वो टेम्पल में एंटर करें। तो इससे उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था। और सभी टेम्पल्स में सब पंचभूत बैलेंस रहते हैं। उनकी फ्लोरिंग स्टोन ह्यूज ग्रेनाइट से बनी होती है। मुझे नहीं पॉइंट समझ में आया था, पर चलिए, ग्रेनाइट से बनी होती है। तो हमें हमेशा घास या कोई भी नरम जगह पर या जमीन पर नंगे पैर चलना चाहिए। हम इसके द्वारा मदर अर्थ से एनर्जी लेते हैं। अभी भी हमारे प्राचीन के लोग और अभी भी हमारे साउथ में वर्कर लोग जब अपने खेतों में जाते हैं तो वो अपनी चप्पल को बाहर उतार देते हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन को बहुत ही पवित्र मानते हैं, कर्म भूमि है। इसलिए वो ग्रेटिट्यूड के लिए और प्रेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक समझ गया, उतार देते हैं चप्पल। बाली में भी अभी भी वो चप्पल उतार देते हैं, और चप्पल उतारने के बाद वो प्रेयर करते हैं किसान, और फिर उसके बाद अपने फील्ड में, अपने खेतों में घुसते हैं। आप तभी वो जितना भी काम करते हैं वो नहीं थकते हैं, और जितना भी वो चाहे जीना वो जी सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ उनके हाथ में रहती है।
एक और फैक्टर सर ने बताया है कि आप लंबे लंबे समय तक नहाइए, लॉन्ग लॉन्ग शावर लेना है आपको, क्योंकि ये जो वाटर एनर्जी है, चाहे वो आप अगर ये वाटरफॉल और बीच और स्विमिंग के द्वारा हो रही है तो और अच्छा है, पर अगर ऐसा नहीं है तो भी आप अपने घर के बाथरूम में लॉन्ग शावर ले सकते हैं, क्योंकि पानी जल हमको पुनर्जीवित करता है, रिजुविनेट करता है, और हमारी इमोशनल हीलिंग भी पानी के द्वारा ही होती है। और आखिरी जो सर ने बताए हैं कि कभी भी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचिए कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कभी भी ऐसे थॉट को मत लाइए, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। आपकी बॉडी, आपकी सेल्स उसी के अनुसार ही काम करना शुरू कर देगी। तो आप बुढ़ापे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, हमेशा महसूस करते रहिए कि आप यंग हैं, आप वाइब्रेंट हैं, और जितना ज्यादा आप फील करते जाएंगे आप 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। हमारे पुराण रामायण में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हनुमान जैसे कई अभिमन्यु नहीं, अश्वत्थामा, ये सब जो चिरंजीवी हैं, वो ये बताते हैं कि हम एटर्नल बीइंग हैं और जितना चाहे हम जी सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करके अपने कर्मा को काटिए, आप अपने कर्मा लूप से बाहर निकलिए और गुड कर्मा करिए, ताकि आपके बैड कर्मा जल्दी से जल्दी बर्न हो। और इस लाइफ टाइम में ही आपको ये सब करना है। अभी आपके हाथ में आपके वर्तमान क्षण है, तो आप सिंसियरली मेडिटेशन करिए, गुड कर्मा करिए, सर्विस करिए, और अपने पिरामिड के नीचे अपने फ्रूट्स और पानी को रख के कंज्यूम करिए, क्योंकि उससे उसकी लाइफ फोर्स बढ़ती है। पिरामिड के अंदर जब भी मैं सोता हूँ तो सिर्फ 1 घंटे में ही मैं रिचार्ज हो जाता हूँ, ऐसा प्रदीप सर ने बताया। आप चाहे तो हाँ, यदि आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो तब भी अगर आप उसके नीचे बैठे रहेंगे तब भी आप एनर्जी को लेते रहेंगे। और अगर आपके घर में कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप पिरामिड लगा लीजिए, वो स्वतः ही धीरे धीरे नॉनवेज खाना छोड़ देगा और वेजिटेरियन बन जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम करना है, ज्यादा मेडिटेशन करना है पिरामिड के नीचे, और हेल्दी और वेल्दी रिच तभी बनेंगे जब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। तो अब जब आपको ज्ञान मिल गया है तो आप इसको आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। स्पिरिचुअल, ये तो हमारे को फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी इमोशनल हेल्थ है, जो भी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ से। जो हम ज्ञान भारत में पूरे समय आत्मज्ञान ले रहे हैं, मौन कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, इन सब से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ती जा रही है। आपको अलग से कोई इमोशनल हेल्थ के लिए नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। और यही सब हेल्थ मिलकर ही, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है, यही सब मिलकर ही आपकी होलिस्टिक हेल्थ को बनाते हैं। और यही नियम है इस अर्थ पे रहने का कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने इमोशन को स्वस्थ रखें, और अपने साइकोलॉजिकली भी आप स्वस्थ रहें, अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें। स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी जड़ है और फिजिकल हेल्थ आपका फल है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट, और सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो रोज इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना है, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, तब आप होलिस्टिक हेल्थ को पा सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि शरीर को ज्यादा सोने की आदत है तो कैसे बताएंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखी थी, पहला वाला पता नहीं किसने पूछा था। तो उन्होंने कहा है कि सर ने, कि सेठ मास्टर ने कहा है कि पहले 3 घंटे नींद आपको रिचार्ज कर देती है, उसके बाद जितने घंटे आप सोते हैं आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। पर महिला और पुरुष की बॉडी अलग अलग होती है। पुरुष को कम सोना चल जाता है, मतलब उनकी बॉडी कम सोने के लिए ही है, और महिला को ज्यादा सोना पड़ता है, लेडीज लोगों को। तो
अगर आपको लग रहा है कि आपको 6 घंटा सोना है तो आप 6 घंटा सोइए, अगर आपको 3 घंटे में ही आपकी पर्याप्त है तो 3 घंटा सोना चाहिए, पर आप माइंड ओवर मैटर मतलब अपने ऊपर जबरदस्ती मत थोपिए कि नहीं ऐसा कहा गया कि ज्यादा सोना ही अच्छा है। आप इसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, जो मैं कह रहा हूँ 4 घंटे आज से आप रात को सोइए और 1 घंटा दोपहर को सो के देखिए और आप खुद फर्क देखेंगे। किसी ने चांद कपूर जी ने ही शायद पूछा था मोर नेगेटिव आयंस का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा है कि नेगेटिव, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि कोई नेगेटिव चीज है, पर ऐसा नहीं है नेगेटिव। थैंक यू मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोग इतने प्यार से मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आप लोग का यूट्यूब में, थैंक यू। तो नेगेटिव का अर्थ हमेशा नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव आयंस हमारे जो सर ने कहा है वो हेल्दी वाइब्रेंट के लिए है। तो जितने नेगेटिव आयंस रहेंगे वहां पर प्राणा शक्ति ज्यादा रहेगी। और फिर चांदी ने पूछा क्या बड़ों के लिए, यंग लोगों के लिए और बूढ़ों के लिए एक बराबर ही नींद होती है? तो सर ने कहा कि मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कोई भी चीज को एक बंधे बंधाए नियम को मत मानिए, आप तय मत करिए, आप अपने सेंसिटिव बनिए, अपने शरीर को सुनिए कि आपका शरीर क्या चाहता है। अगर वो 3 घंटा चाहता है तो 3 घंटा लीजिए, अगर वो कह रहा है कि आज मुझे 5 घंटा चाहिए तो 5 घंटा सोइए। कोई भी चीज अपने शरीर पर अपने मन पर थोपना नहीं है, तभी आपकी बैलेंस बॉडी होगी। बैलेंस नींद का बैलेंस स्लीप का मतलब ही होता है कि न ज्यादा सोना न ज्यादा कम सोना, आप खुद ही तय करें। और हर एक के शरीर की अलग अलग नींद की मात्रा होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में किसी ने पूछा था, तो हर एक के शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होती है और हर एक व्यक्ति की जो शरीर की जो उसकी सेल्स होती है, उसकी मेमोरी होती है, वो भी उसकी खुद की रहती है, उसको हम अब चेंज कर सकते हैं। आप अपने शरीर की जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको रिप्रोग्रामिंग करके कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर 4-5-6 बजे आपके नहीं उठते हैं मान लीजिए, पर आप अगर उठना चाहते हैं, ये आपका चुनाव है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, ये आपका चुनाव है। तो अगर आप चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे आप उठते जाएंगे तो आपकी बॉडी क्लॉक भी चेंज होते जाएगी, फिर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, स्वतः ही आप उस टाइम में उठ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब कोई अमेरिका के लोग जब इंडिया में आके रहते हैं या यहाँ के लोग वहां जाके कुछ समय के लिए रहते हैं, तो हमारा इंडिया और अमेरिका का दोनों का क्लॉक बिल्कुल ऑपोजिट है, रात और दिन का फर्क है, 12 घंटे का लगभग फर्क है। यहाँ जब सुबह होती है वहां रात होती है। तो शुरू के 2-3 दिन जेट लैग होता है, उनको बहुत नींद आती है। जब वहां पर जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका चली गई, तो जब यहाँ पे सुबह रहेगी दोपहर रहेगी तब मैं वहां पे जगी रहूंगी, पर जब यहाँ रात होगी तो मुझे वहां नींद आती रहेगी। पर 2-3 दिन के प्रैक्टिस के बाद पूरे 12 घंटे की हम बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया से कोई अमेरिका गया तो वो रोज इंडिया के टाइम से ही सोएगा, नहीं, धीरे धीरे हमारी बॉडी क्लॉक चेंज होती है। तो जब हम 12 घंटे चेंज कर सकते हैं तो 2-3 घंटे चेंज करने में क्या जाता है, कर सकते हैं। आज से नीता भी ट्राई करेगी, ठीक है। तो सर ने कहा कि आप हाँ, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, तो फ्रूट्स में तो बहुत सारे फर्टिलाइजर और दवाइयों का छिड़काव हो जाता है। तो सर ने कहा कि आप फ्रूट्स पर ही निर्भर मत रहिए, आप रिमाइंड करिए कि आप सोल हैं, आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। और जो आप चाहते हैं कि मुझे प्रोटीन भी मिले, मुझे ये भी मिले, उन सब के बारे में भी आप कुछ मत सोचिए। सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को आप बढ़ाइए, इस लाइफ साइंस को समझिए, अपने आप आपके स्वाभाविक रूप से आपके पास अच्छी हेल्थ आ जाएगी। किसी ने पूछा था कि कर्मा कैसे इफेक्ट करता है मैनिफेस्टेशन में, तो घर बनाने के लिए आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो बैंक में तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर आपके कर्मा बैगेज बहुत है
तो जब तक कि आप कर्मा को नहीं चुकाएंगे, अपने पाठ को नहीं पढ़ेंगे, अपने उस बैगेज से नहीं छूटेंगे, तब तक के आपके मैनिफेस्टेशन में आपको दिक्कत आएगी। आपके पास एनर्जी होना चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए। हमारे पास फ्री विल तो जरूर है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर ये एक फॉर्मूला है कि हमारे कर्मा का अगर बैगेज है तो ये तीनों फैक्टर, जो भी हमने ये 3 फैक्टर्स जाने थे, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कर्मा की गठरी है। तो पहले गठरी हल्का करो, फिर मैनिफेस्टेशन तेजी से करो। शायद इसीलिए कई लोगों को मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होता है, स्लो प्रोसेस होती है, कई लोग की फास्ट होती है। गॉट इट। तो कर्मा सेंटेंस ऐसे लिखती हूँ ना, तो कर्मा इफेक्ट डालते हैं आपके मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन आप वो जरूर कर सकते हैं अपने फ्री विल के द्वारा जो आपकी जरूरत है, क्योंकि जो जरूरत है वो आपने सोल प्लान करके लाए हो, तो आप पर आपकी जो जरूरत है, जो नीड है, उसमें आपके कर्मा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी सोल प्लान के अनुसार वो चीजें आपको मिलती जाएंगी। पर जब कोई इच्छा करते हैं, आपकी कोई वासना होती है, कोई इच्छा होती है, आपकी कोई जो वांटिंग होती है, वो आप तब तक के नहीं पूरी कर पाएंगे जब तक कि आपके पास करेंसी नहीं होगा। करेंसी का अर्थ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनर्जी होता है। तो जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, जितने ज्यादा गुड कर्मास होंगे, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और गुड कर्मास क्या है? तो सर ने कहा कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो गुड कर्मा है। और सबसे हाईएस्ट गुड कर्मा होता है दूसरों को मेडिटेशन सिखाना, या मेडिटेशन के सोल साइंस को स्प्रेड करना। अगर आप दूसरों के विकास में, आत्मिक विकास में मदद करती हैं, तो वो आपका सबसे उत्कृष्ट गुड कर्मा होता है। पर अगर आप टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन लोगों की हेल्प करिए जो ऐसी टीचिंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की आप मदद करिए। इन जनरल किसी की भी मदद करना गुड कर्मा है। और जब अगर आपके में फियर एनर्जी रहेगी, वो आपके मैनिफेस्टेशन को नहीं होगी। और फियर की एनर्जी, डर की एनर्जी कहाँ से आती है? आपके कर्मा के द्वारा आती है। आपका थॉट पावर, आपका इंटेंट पावर कम होते जाता है इस डर के मारे, जो फियर एनर्जी आपकी कर्मा से आई है। इसीलिए जब आपकी संकल्प शक्ति और कल्पना शक्ति कमजोर होते जाएगी, तो आपका मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे होगा। होपोनोपोनो के बारे में कहा तो सर ने कहा कि ये गुड टेक्निक है, सभी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। और आपको अगर करने का मन है तो करिए, पर अगर आप सिंसियर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी इस होपोनोपोनो वगैरह की किसी की भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत कोशिश की थी होपोनोपोनो करने की, पर मुझे कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो मैंने 5-10 दिन करके छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस मेरी पूरी हो चुकी है, बाकी आपकी मर्जी। देखिए क्या होता है कि हो सकता है प्रदीप सर बिल्कुल सही कह रहे हो कि अच्छी मेडिटेशन करने वाले को होपोनोपोनो की जरूरत नहीं होती। पर यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो मेडिटेशन तो कर रहे हैं, पर उनके इमोशनल बैगेजेस इतने हैं कि उनका ना मेडिटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। क्योंकि आपको ज्ञान लेने के लिए भी एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो जिनके पास इमोशनल गार्बेज है, तो अगर वो होपोनोपोनो से उसको रिलीज करके फायदा उठा रहा है, तो उसमें क्या बुरा है? हम मेडिटेशन करते हैं, मैं नहीं करती हूँ एफर्मेशन, पर उसके बावजूद मैं एफर्मेशन के बारे में बताती हूँ। इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर सोल की अपने आप एक्सपीरियंस है, हर एक की अपनी एक स्पीड है। किसी को एफर्मेशन मेडिटेशन के साथ बहुत फायदा देता है, कई लोगों को मेडिटेशन के साथ होपोनोपोनो बहुत फायदा देता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फीडबैक सुने हैं, क्योंकि जो भी मुझे फोन करते हैं, मुझे बताते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे हम एक पिरामिड को यूज कर रहे हैं टूल के रूप में, क्रिस्टल को यूज कर रहे हैं टूल के रूप में, तो यदि होपोनोपोनो या एफर्मेशन अगर आपकी मन कह रहा है, तो आप बिल्कुल यूज करिए। आप बिल्कुल मत सुनिए कि कौन क्या कह रहा है।
हर एक मास्टर की अपना एक परसेप्शन होता है, आप उसकी टीचिंग में से वो ले लीजिए जो आपको पसंद है। अगर उसके बावजूद आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं मुझे एफर्मेशन मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल करिए। मैंने खुद की अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मुझे एफर्मेशन मुझे आते ही नहीं है, मुझे समझ ही में नहीं आता। मैंने पहले किया है 3-4 साल पहले, और मैं एफर्म नहीं कर सकती, मैं होपोनोपोनो नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि मेरी वो लर्निंग पूरी हो चुकी है। पर यदि आपको मदद कर रहे हैं ये चीजें, तो फिर आप अपने मन की सुनिए। प्रदीप सर ने खुद भी कहा है, फॉलो योर हार्ट। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत टाइम हो गया है फ्रेंड्स, अब हमको मीटिंग लीव करना है। और मैं कल सेशन लूंगी, क्योंकि हमारे सोल गिफ्ट के कुछ एक चैप्टर्स कंप्लीट करने बाकी रह गए हैं। तो मैं कल सेक्सुअलिटी के ऊपर बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग अभी भी मुझसे कनेक्टेड हैं जो इसके बारे में पूछते रहते हैं। मैंने ऑलरेडी पीएमसी में इसको दिया है स्वाध्याय में, पर वहां पर बहुत कुछ काटा गया था और बहुत चीजें मैं नहीं बोल पाई थी जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं कल सेक्सुअलिटी के ऊपर बोलूंगी कि क्यों एक आत्मा होमोसेक्सुअल गे बनना चुनती है, क्यों लेस्बियन होना चुनती है, क्यों ऐसे सोल प्लान, जबकि उस सोल को मालूम होता है कि पृथ्वी पर मैं जब ये लूंगा तो बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाऊंगा। टफेस्ट चैलेंज है गे बनना और लेस्बियन बन के जीवन को बिताना। पर उसके बावजूद अगर सोल चुन रही है, तो क्या कर्मा ही है कारण, या उसका खुद का चुनाव है? बहुत प्यारा टॉपिक है। और हमारे आसपास कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो इससे पीड़ित हैं, तो हमें उनके बारे, उनके सोल प्लान के बारे में समझना है, ताकि कल के बाद आप कभी भी किसी भी गे, किसी भी लेस्बियन को आप जज मत करें। तो कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को उसका ज्ञान दे सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग हैंड रेज करे हैं, पर रियली मैं बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ, क्योंकि सवेरे भी सेशन था और अभी भी था। तो अभी मैं कोई क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दूंगी। प्लीज जो भी होगा, कल मेरा सेशन है, तो आप लोग जितने क्वेश्चन पूछेंगे 4 से 6:30 बजे तक के आप लोग के साथ रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, शपथ है, मेडिटेशन करिए और अपनी हेल्थ पर आज से